सो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग गेट एग्जाम में, एसएससी में, एई में 3 क्वेश्चंस कंपलसरी आएगा. ईएससी एग्जाम में भी 3 क्वेश्चंस मैंडेटरी फ्रॉम वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग. आपको ये वर्ड्स मालूम था ना? सैनिटरी इंजीनियरिंग, sanitary engineering, the same is considered as a public health engineering. कभी सुना वो वर्ड्स? सैनिटरी इंजीनियरिंग और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, कभी सुना वो वर्ड्स? सैनिटरी इंजीनियरिंग और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग we can classify into two. One is wastewater engineering. Second one is solid waste management. Sanitary engineering is classified into two. One is wastewater engineering, another one is solid waste management. So wastewater engineering से पूरा का पूरा 3 क्वेश्चन आएगा. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन आएगा आपको. चलो, सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? टू मेंटेन क्लीनलीनेस, हाइजीनिक कंडीशन. हमारा घर का बाजू में, सोसाइटी में, सिटी में और इन योर टाउन और विलेज, टू मेंटेन क्लीनलीनेस, हाइजीनिक कंडीशन. whatever engineering structures required, engineering structures designed, that is studied under sanitary engineering. So your health, your prosperity completely depending upon surrounding cleanliness only. आपका सराउंडिंग्स अच्छा नहीं होगा, आपका तबीयत खराब हो जाएगा बाबा. आपका सराउंडिंग अच्छा नहीं था, पूरा सॉलिड वेस्ट से फिल हो गया, पूरा गंदा पानी से फिल हो गया, so that it will attract insects, mosquitoes and flies. वो आपको डिसीज काज करेगा ना. सो गंदा पानी हो गया, बहुत ज्यादा सॉलिड वेस्ट होने के बाद बैक्टीरिया वायरस एटमॉस्फेयर से अट्रैक्ट हो जाएगा. बैक्टीरिया वायरस आपको तबीयत खराब करेगा ना, डिसीज काज करेगा. सो दैट टू मेंटेन इन अवर सराउंडिंग्स टू मेंटेन cleanliness or hygienic condition. In our surroundings to maintain cleanliness or hygienic condition, what we are going to have is sanitary engineering. As that control human health, we call it as public health engineering. As that create health aspects, it make the health to be very good. That is called public health engineering. So wastewater engineering, solid waste management, दो चीज है. So you are consuming water ना, utilized water ना. So utilized water from various sources. Utilized water from various sources. From different sources, given to sewer, and this sewer delivered that water to STP, sewage treatment plant. What is utilized water from different sources? हर एक दिन हम ज्यादा पानी कंज्यूम करेगा ना, for drinking, cooking, bathing, cleaning of house, cleaning of roads, cleaning of यूटेंसिल्स. तो पूरा का पूरा पानी वेस्ट वाटर हो जाएगा. पूरा का पूरा पानी वेस्ट वाटर हो रहा है. WW is waste water. So that waste water from different sources given into a pipeline system, underground drainage system. सीवर कौन रे बाबा?
Sewer is a underground drainage pipe which collects wastewater. Sewer is an underground drainage pipe which collects wastewater. Now that collected wastewater will be transported. So what are functions of sewer? Sewer will perform collection and conveyance, transport. पानी, गंदा पानी कलेक्ट किया, वेस्ट वाटर इज कलेक्टेड and transported to sewage treatment plant, STP. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पूरा का पूरा पानी ट्रीटमेंट हो गया. ट्रीटमेंट होने के बाद दिस वेस्ट वाटर इज हार्मफुल ना, बहुत ज्यादा हार्मफुल था वो, ये पानी था ना, दिस इज वेरी हार्मफुल वेस्ट वाटर. नाउ ट्रीटमेंट करने के बाद क्या हो जाएगा? ट्रीटमेंट करने के बाद harmful wastewater converted to harmless wastewater. Harmful wastewater after treatment converted to harmless wastewater. Now it is released to rivers, harmless wastewater. So this is the journey ना. Sanitary engineering का जर्नी ऐसा हो जाएगा ना. वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में हम सिविल इंजीनियर, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में हम सिविल इंजीनियर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट द स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू collection and conveyance of wastewater, related to treatment of sewage, wastewater, and then disposal. So what you are going to do? In wastewater engineering? Design and construction of structures. Good morning, Naveen. डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स. क्या चीज के लिए डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स? रिलेटेड टू कलेक्शन, कन्वेयंस, ट्रीटमेंट and disposal. That is studied under waste water engineering. समझ आ रहा है? ये पूरा का पूरा we are going to study under WW engineering. अरे WW कौन रे बाबा? WW engineering वो कौन रे बाबा? वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग. समझ आ रहा है? डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू collection, conveyance, treatment and disposal of wastewater. Collection, conveyance, treatment and disposal of wastewater. For that purpose, whatever required engineering structures. Designed and constructed and operated. That is wastewater engineering. चलो हो गया wastewater engineering. Now, here we talk about refuse. Refuse कौन रे दादा? बताओ. What is refuse? Any kind of waste discarded by humans. हमको क्या नहीं चाहिए वो सिर्फ थ्रो करेगा ना. हमको क्या चीज नहीं चाहिए वो सिर्फ थ्रो करेगा, नहीं करेगा? बताओ बाबा. हमका एटमॉस्फेयर से क्या चीज नहीं चाहिए वो सिर्फ थ्रो करेगा. एनवायरनमेंट में, हमारा सराउंडिंग्स में डिस्कार्ड करेगा. एनी काइंड ऑफ वेस्ट डिस्कार्डेड बाय ह्यूमंस, दैट इज रेफ्यूज. व्हाट इज द काइंड हियर? द काइंड इज लिक्विड, सॉलिड,
or semi solid, any kind, it may be a liquid, it may be a solid, or it may be a semi solid हो जाएगा. That waste we can classify into solid. सॉलिड में क्या आएगा? सॉलिड में गार्बेज, रबिश, एशेस, डस्ट, वो पूरा मिलेगा ना सॉलिड वेस्ट में. सॉलिड वेस्ट, सॉलिड रेफ्यूज लिखो, सॉलिड रेफ्यूज लिखो आप, अच्छा हो जाएगा. सॉलिड रेफ्यूज, सॉलिड रेफ्यूज में क्या मिलेगा? सॉलिड रेफ्यूज में गार्बेज, रबिश, एशेस एंड डस्ट मिलेगा. गार्बेज, रबिश, एशेस एंड डस्ट मिलेगा. देन लिक्विड रेफ्यूज कौन रे दादा? लिक्विड रेफ्यूज that is inorganic, harmless wastewater. इनऑर्गेनिक हार्मलेस वेस्ट वाटर. क्या नाम दिएगा इनऑर्गेनिक हार्मलेस वेस्ट वाटर को? क्या नाम दिएगा बाबा इनऑर्गेनिक हार्मलेस वेस्ट वाटर को? लिक्विड रेफ्यूज. इनऑर्गेनिक हार्मलेस वेस्ट वाटर को नाम क्या है? सल्लेज. कहां से आ रहे? कहां से आ रहे? सल्लेज कहां से आ रहे? इनऑर्गेनिक हार्मलेस वेस्ट वाटर कमिंग फ्रॉम किचन, सिंक और वॉशरूम्स. From kitchen, sink and washroom. Inorganic harmless liquid wastewater. Inorganic harmless liquid wastewater. That is liquid refuse coming from kitchen, sink and washroom. Kitchen, sink and washroom. चलो. और solid refuse, garbage is most dangerous. Organic चलेगा. Ashes and dust are नॉन डिग्रेडेबल हो जाएगा. नॉन डिग्रेडेबल. एस आर नो? सॉलिड रेफ्यूज में गार्बेज ऑर्गेनिक चलेगा. एशेस एंड डस्ट आर नॉन डिग्रेडेबल. रबिश इज ए मिक्सर ऑफ ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक हो जाएगा. रबिश इज ए मिक्सर ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो जाएगा. गार्बेज इज ऑर्गेनिक, रबिश ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक. एशेस एंड डस्ट नॉन डिग्रेडेबल हो जाएगा. नॉन डिग्रेडेबल एशेस एंड डस्ट. सो सॉलिड रेफ्यूज, लिक्विड रेफ्यूज हो गया. सॉलिड रेफ्यूज, लिक्विड रेफ्यूज हो गया. और सेमी सॉलिड रेफ्यूज. सेमी सॉलिड रेफ्यूज. सेमी सॉलिड रेफ्यूज कौन रे बाबा? दैट सेमी सॉलिड रेफ्यूज इज हीरो ऑफ वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग. हीरो ऑफ वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग. अरे हीरो बोलने के बाद डोंट फील दैट, बट इट इज रिगार्डिंग दैट सीवेज ओनली. वी आर टॉकिंग एवरीथिंग इन वेस्ट वाटर. दैट इज वाई वो हीरो बना दिया. वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग पूरा कॉन्सेप्ट हम सीवेज का बारे में बात कर रहे हैं. दैट इज वाई वो हीरो बना दिया. हीरो मीन्स कुछ भी मत सोचो बाबा, कुछ भी मत सोचो. वी आर टॉकिंग एवरीथिंग अबाउट सीवेज. चलो. द मोस्ट डेंजरस, हार्मफुल, even dangerous is the perfect word for it. Most dangerous, harmful, most dangerous. Organic
organic, semi-solid, biodegradable, most dangerous, harmful, organic, or half degradable. No problem. It may be partially organic or fully organic, semi-solid, biodegradable, degraded by microorganism, which we call it as putrescible. Putrescible also we can use, putrescible refuse. Semi-solid, organic, biodegradable, putrescible refuse. What it contain? 99.9% liquid wastewater, 0.1% harmful solids. 99.9% liquid wastewater, 0.1% harmful solids. That is present in sewage. The most dangerous organic, semi-solid, biodegradable, putrescible organic matter. Sewer kaun re baba? Sewer is the conduit to collect and transport sewage or wastewater, conduit to collect and transport sewage or wastewater. Where it is collecting? From different sources to STP. हमारा घर से कलेक्ट करेगा, शॉप से निकलेगा, इंडस्ट्री से निकलेगा, ऑफिस से निकलेगा, कहां से है, सोर्स ऑफ वेस्ट वाटर कहां था, कोई प्रॉब्लम नहीं. But it collect and transport waste water or sewage from different kinds of sources to STP. We have 5 types of sewers now. पहले हाउस सीवर से जर्नी शुरू किया. हाउस सीवर लोडिंग टू lateral sewer, which is on our road. House sewer is the pipe which travel from our house to road. Then it will give towards a lateral sewer. Lateral sewer से branch sewer तक चल रहे. Lateral sewer से branch sewer तक चल रहे वो. Branch sewer. लेटरल सीवर से ब्रांच सीवर से मेन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रंक, मेन और ट्रंक सीवर. ब्रांच सीवर से कहा चल रहे? मेन और ट्रंक सीवर का बारे में चल रहे. हाउस से लेटरल से ब्रांच से मेन और ट्रंक सीवर. प्रणाम केशव कुमार, लेट हो गया. और उनके अलावा कहा चल रहे बाबा? देन अंडरग्राउंड रिजर्वायर पे चल रहे पानी. रिजर्वायर, व्हाट वी कॉल इट एज अ ड्रेनेज. अंडरग्राउंड रिजर्वायर, ग्राउंड के नीचे चले गए, नीचे अंडरग्राउंड रिजर्वायर. वहां से आउटफॉल सीवर, which is outlet of reservoir, outfall sewer. Then finally it delivers to STP.
फाइनली दिस इज गोइंग टू डिलीवर टू, कहा डिलीवर कर रहे बाबू, वेर इट इज डिलीवरिंग, आउटफॉल सीवर इज delivering to sewage treatment plant. Outfall sewer is delivering to sewage treatment plant. So पहले हाउस सीवर फ्रॉम आवर हाउस टू रोड, देन रोड से लेटरल सीवर कनेक्ट कर रहे, देन लेटरल सीवर से मेन रोड, रोड से मेन रोड ब्रांच सीवर, मेन रोड से जंक्शन, जंक्शन में मेन ट्रंक सीवर, मैनहोल लगेगा, रिजर्वायर लगेगा, ड्रेनेज नेटवर्क लगेगा, वहां से आउटफॉल सीवर, वहां से आउटफॉल सीवर, आउटफॉल सीवर से फाइनली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, फाइनली इट गोज टू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. समझ आ रहे बाबू? दिस इज द चार्ट. सीवर हाउ मेनी टाइप्स? 5 टाइप्स, हाउस, लेटरल, ब्रांच, मेन एंड आउटफॉल सीवर. वेरी इंपॉर्टेंट. ये बात बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था. सीवर विच डिस्चार्जेस सीवेज, सीवर विच डिस्चार्जेस सीवेज एट एसटीपी. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सीवेज को डिस्चार्ज करने वाला कौन रे बाबा? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सीवेज डिस्चार्ज करने सीवर कौन रे बाबा? सीवर विच रिलीजेस सीवेज एट एसटीपी, सीवर विच रिलीजेस सीवेज एट एसटीपी, वो कौन रे बाबा? बताओ उनका नाम क्या है? उनका नाम था आउटफॉल सीवर, उनका नाम था आउटफॉल सीवर. आउटफॉल सीवर हो जाएगा ना? आउटफॉल सीवर हो जाएगा ना? सीवर which collects water from different locations, which collects sewage from different locations. ये कौन रे बाबा? सीवर which collects sewage from different location, different location. This is location 1, this is location 2, this is location 3. वो पूरा का पूरा सीवेज एक साथ में रिलीज कर रहे हैं. कहां रिलीज कर रहे हैं? ट्रंक, ट्रंक सीवर से आ रहे हैं ना, इधर से सीवेज आ रहे, इधर से सीवेज आ रहे, दैट इज कॉल्ड ट्रंक सीवर. मेन सीवर, मेन और ट्रंक सीवर. सीवर विच कलेक्ट्स सीवेज फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस, मेन और ट्रंक सीवर रिलीजेस वेस्ट वाटर एट ट्रंक सीवर. चलो सिस्टम ऑफ collection and conveyance of wastewater, system of collection and conveyance of wastewater. ये कौन रे दादा? This system which will collect and transport sewage, collection and conveyance of sewage, collection and conveyance of sewage. Sewerage system, sewerage system. Collection and conveyance of sewage carried out through sewerage system, sewerage system. चलो हो गया.
DWF. DWF कौन रे बाबा? Dry weather flow. DWF is a dry weather flow. Discharge entering into sewerage system. Discharge of sewage into sewerage system on a ड्राई डे. अरे ड्राई डे केशव गारू, आपका ड्राई डे नहीं था. ऑन ए नॉन रेनी डे. डिस्चार्ज एंटरिंग इनटू सीवेज ऑन ए नॉन रेनी डे. इट इज ए रेगुलर डिस्चार्ज. इट इज ए रेगुलर डिस्चार्ज. व्हाट इज इट्स रेगुलर डिस्चार्ज? Regular discharge is nothing but domestic sewage. Domestic sewage. Regular discharge is a domestic sewage. Discharge entering into sewage on a non-rainy day, regular discharge, and it is a domestic sewage हो जाएगा. It's a domestic sewage हो जाएगा बाबू. Q domestic sewage we call QDS, average dry weather flow. Average dry weather flow. Population into per capita sewage flow. Population into per capita sewage flow. Average dry weather flow. Population into per capita sewage flow. So ये per capita sewage flow कौन रे बाबा? So domestic sewage is equal to average dry weather flow population into per capita sewage flow. हमको per capita sewage flow का बारे में बात करना चाहता है. Per capita sewage flow. Per capita sewage flow is some factor into per capita demand PCD. Some factor into per capita demand PCD. ये PCD कौन रे बाबा? PCD per capita demand. Factor is taken as 0.75 to 0.8, 75% to 80%. 75% to 80%. Per capita demand रेगुलर ना 135 LPCD और 200 LPCD हमको मालूम था ना रेगुलरली. That is per capita demand. Per capita sewage flow is a factor into per capita demand 0.75 to 0.8. Now maximum daily dry weather flow. Maximum daily dry weather flow, what is the factor? Maximum daily dry weather flow का factor क्या है बाबा? Maximum daily dry weather flow 2 into factor is 2 ना, 2 into average daily dry weather flow. 2 into average daily dry weather flow. Maximum hourly dry weather flow. Maximum hourly dry weather flow. अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? Maximum hourly dry weather flow क्या हो रहा है? 1.5 into maximum daily. 1.5 into maximum daily dry weather flow. Then 1.5 into 2 into average DWF. So 3, this is very very important word. The factor for maximum hourly dry weather flow. The factor for maximum hourly dry weather flow. The most repeated question हर एक एग्जाम में, स्टेट एग्जाम में, एसएससी में, गेट में, आईएएस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला 3 ले लो, 2.7 नहीं था. इफ दे आस्क अबाउट सीवेज,
If the word sewage, sewer, dry weather flow word is there, maximum hourly variation factor is 3. Maximum hourly variation factor is 3. समझ आ रहे? Maximum hourly variation factor is 3. चलो चलो हो गया. WWF कौन रे बाबा? It's not fighting. It's about wet weather flow. It's about wet weather flow. WWF wet weather flow. Discharge on a rainy day. Discharge on a rainy day. Rainy day का discharge. Q डिस्चार्ज ऑन ए रेनी डे मालूम होगा ना आपको. वेट वेदर फ्लो इज इक्वल टू रेनी डे में डीएस मिल जाएगा, एसएस मिल जाएगा. डीएस इज डोमेस्टिक सीवेज ना, डोमेस्टिक सीवेज ना. एसएस इज स्टॉर्म सीवेज, स्टॉर्म सीवेज. QDS plus QSS, WWF. Discharge on a rainy day, both are there. Domestic sewage is there, storm sewage is there. But QSS on that day is a very huge one when compared to QDS. QSS on a rainy day is very huge when compared to QDS. So we conclude WWF is equal to QSS. Neglecting QDS, very very high. Storm sewage, रेनफॉल, बारिश आने के बाद वेस्ट वाटर आएगा, वो स्टॉर्म सीवेज, वो स्टॉर्म सीवेज that will be very very high when compared with the domestic sewage. So we are considering WWF is equal to storm sewage, QSS. WWF is equal to storm sewage, QSS. वो कौन रे बाबा? QSS. आपको मालूम था ना वो कहां से आ गया? CIA by 360, CIA by 360 और एयर by 360 ले लो. CIA by 360 और एयर by 360 ले लो. So we have studied this in hydrology, we have studied in environmental. See, coefficient of runoff by rainfall, which is also called impermeability factor. Impermeability factor. See, coefficient of runoff by rainfall, impermeability factor. I, intensity of rainfall, mm per hour. A, area, hectare. But still you get discharge in meter cube per second. I explained already why. हमारा प्लस क्लास में उनका एक्सप्लेनेशन दिया. इंटेंसिटी mm पर आवर में ले रहे, एरिया हेक्टार्स में ले रहे, बट स्टिल यू आर गेटिंग डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर सेकंड. उनका बारे में हम ऑलरेडी दिया. कहा दिया? प्लस क्लास में दिया. हाउ इट इज हैपनिंग. सो आपको मालूम था उनका बारे में. चलो हो गया. QSS is equal to CIA by 360 or air by 360. C, coefficient of runoff, runoff by rainfall, ratio of runoff to rainfall, impermeability factor. I, intensity of rainfall mm per hour,
A area of rainfall occurrence, hectare. A is same. The same C is written as I. C is written as I. I is taken as R. Coefficient of runoff, impermeability factor, I is starting word, I. Intensity of rainfall na R. Area A. So we can write air by 360. वो भी लिखेगा ना, IRC RRI A area air by 360. चलो डिजाइन ऑफ सीवर्स में हम बहुत ज्यादा नहीं बोलेगा, इधर सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला भी दिएगा. ज्यादा थियरी हम प्लस क्लास में किया, वो पूरा का पूरा थियरी नहीं चाहिए. डायरेक्टली व्हाट इज नीडेड फॉर योर एग्जाम ओनली वी आर डिस्कसिंग हियर. एग्जैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. पहले सीवर इज डिजाइन्ड एज, क्यों डिजाइन किया सीवर? डिजाइन्ड एज, कैसा डिजाइन किया? सीवर इज डिजाइन्ड एज ओपन चैनल, कंस्ट्रक्टेड एज conduit. Sewer is designed as open channel, constructed as conduit. क्यों ऐसा डिजाइन किया? क्यों ऐसा डिजाइन किया? व्हाट इज द रीजन? रीजन कौन रे बाबा? रीजन कौन रे बाबा? पार्शियल फ्लो होना चाहिए, पार्शियल फ्लो होना चाहिए हमको. क्यों पार्शियल फ्लो? टू अकोमोडेट फ्लो, टू अकोमोडेट फ्लक्चुएशन, फ्लो फ्लक्चुएशन, टू अकोमोडेट फ्लो फ्लक्चुएशन, पार्शियल फ्लो. We don't want sewage to travel flow full, we want sewage to travel half पार्शियल में फ्लो करना चाहिए. टू अकोमोडेट फ्लो फ्लक्चुएशन, टू प्रोवाइड स्पेस फॉर गैसेस, टू प्रोवाइड स्पेस फॉर सर्कुलेशन ऑफ गैसेस, टू प्रोवाइड स्पेस फॉर सर्कुलेशन ऑफ गैसेस. पार्शियल फ्लो हो गया ना, पार्शियल फ्लो समझ आ रहे? एक्स्ट्रा स्पेस फॉर गैसेस एंड फ्लो समझ आ रहे? देन टू अवॉइड नो सिल्टिंग, टू अवॉइड सिल्टिंग, टू अवॉइड स्काउरिंग. नो सिल्टिंग एंड नो स्काउरिंग चाहिए. पार्टिकल्स सेटिल मत करो, लेयर ऑफ सीवर एरोजन मत करो, पार्टिकल्स सेटलिंग मत करो, सीवर का टॉप लेयर एरोड मत करो. नो सिल्टिंग एंड नो स्काउरिंग. नो सिल्टिंग, नो स्काउरिंग. पार्टिकल्स सेटलिंग इन द सीवर पाइप इज नॉट एक्सेप्टेड. फ्लो टू बी ट्रेवल्ड कंटिन्यूअसली, फ्लो टू बी ट्रेवल्ड कंटिन्यूअसली. चलो हो गया. these are the three reasons, these are the three reasons: partial flow, no silting, no scouring. These are the three reasons to make the sewer to be open channel flow, to make the sewer to be open channel flow. Self cleansing velocity, self cleansing velocity. ये कौन रे दादा? सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी कौन रे इधर? सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी, velocity of flow which avoid particle to settle, which stop particle to settle. This is the minimum flow velocity, lowest possible flow velocity. Minimum flow velocity
which avoid particle to settle. Minimum flow velocity which avoid particle to settle, self cleansing velocity Vs. Under the root 8 k by f GD into s minus 1. Under the root 8 k by f under the root 8 k by f GD into s minus 1. You know k, sediment coefficient, f, frictional factor, g is acceleration due to gravity, d diameter of particle, s specific gravity. 8 k by f into GD into s minus 1 self cleansing velocity. So सेल्फ क्लेंजिंग वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? Vs फार्मूला दिया, रेंज क्या है? ऑप्टिमम रेंज दिया ना हम. सेल्फ क्लेंजिंग वेलोसिटी का ऑप्टिमम रेंज क्या हो जाएगा? 0.6 to 1.2 मीटर पर सेकंड. 0.6 to 1.2 मीटर पर सेकंड. सेल्फ क्लेंजिंग वेलोसिटी रेंज, ऑप्टिमम रेंज दे रहे 0.6 to 1.2. So design velocity in sewer, design velocity must be greater than or equal to self cleansing velocity. It must. नहीं होगा सेटलिंग हो जाएगा. डिजाइन वेलोसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी. ये नहीं होगा तो पार्टिकल सेटल हो जाएगा बाबू, पार्टिकल पूरा का पूरा सेटल हो जाएगा. चलो नॉन स्कौरिंग वेलोसिटी. नॉन स्कौरिंग वेलोसिटी कौन रे दादा? VNS. नॉन स्कौरिंग वेलोसिटी VNS. मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो that avoid scouring. If you go maximum more than that, that will cause scouring. If you go through a velocity greater than this, VNS का ज्यादा वेलोसिटी से पानी चल रहे, स्काउरिंग हो जाएगा, एरोजन हो जाएगा. समझ आ रहे? VNS से स्काउरिंग वेलोसिटी से ज्यादा, फॉर एग्जांपल आपका सीवर का स्काउरिंग वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड दिया, पानी 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे, अंदर लेयर हो जाएगा ना, वो लेयर पूरा एरोड हो जाएगा. सीवर का अंदर लेयर, और वो लेयर पूरा का पूरा एरोड हो जाएगा. सो सीवेज कैन ट्रैवल विथ ए वेलोसिटी विच इज लेस देन नॉन स्काउरिंग वेलोसिटी. इट मस्ट नॉट गो ग्रेटर देन नॉन स्काउरिंग वेलोसिटी. ज्यादा होगा तो नॉन स्काउरिंग वेलोसिटी को ज्यादा होगा तो पूरा का पूरा एरोजन चल जाएगा. लाइनिंग ऑफ सीवर विल बी एरोडेड. समझ आ रहे? नॉन स्काउरिंग वेलोसिटी समझ आ रहे? VNS maximum velocity to avoid varies from sewer to sewer, varies based on sewer type, based on material and type of sewer. Non-scouring velocity depending upon material of sewer and type of sewer. How the design velocity must be? Design velocity must be less than or equal to VNS. So what is the meaning of this?
design velocity must be between Vs and Vns. Design velocity must be between Vs and Vns. समझ आ रहे बाबा? It must be greater than Vs, less than Vns. So design velocity must be between Vs and Vns. चलो, design formula. Design formula. First one full flow. First one full flow. Q is equal to pi by 4 d square into 1 by n r power 2 by 3. So 1 minute. In place of r क्या ले लेगा आप? In place of r क्या ले लेगा? d. d by 4 to the power 2 by 3 s power 1 by 2. क्या फर्क है? फुल फ्लो एंड हाफ फ्लो का डिफरेंस क्या है? फुल फ्लो एंड हाफ फ्लो का फर्क क्या है बाबू? फुल फ्लो एंड हाफ फ्लो का फर्क क्या है? पाई बाई 8 ले लो, पाई बाई 8 डी स्क्वायर, बस रिमाइनिंग सेम हो जाएगा. रिमाइनिंग सेम हो रहा है ना फुल फ्लो और हाफ फ्लो में? फुल फ्लो और हाफ फ्लो में पाई बाई 8 डी स्क्वायर इंटू 1 बाई एन इंटू डी बाई 4 टू द पावर 2 बाई 3 डी बाई 4 टू द पावर 2 बाई 3 एस पावर 1 बाई 2. सेम सेम आ गया, सेम आ गया. समझ आ रहा है? Q इज इक्वल टू पाई बाई 8 डी स्क्वायर. फुल फ्लो हाफ फ्लो का डिफरेंस समझ आ रहा है? फुल फ्लो में पाई बाई 4 ले लो, हाफ फ्लो में पाई बाई 8 ले लो. एरिया हाफ हो गया खत्म, एरिया हाफ हो गया खत्म. फार्मूला बस. सो व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क यू, फुल डेटा गिवन टू यू, they ask to determine d, to find diameter. diameter estimate होना चाहिए आप, diameter estimate होना चाहिए आप. समझ करो, सिर्फ diameter estimate होना चाहिए. फुल फ्लो हाफ फ्लो. और गेट में ये याद रखना पड़ेगा, गेट एग्जाम में v velocity proportional to root s, velocity proportional to r power 2 by 3. आप ये याद करना पड़ेगा. They will say gradient is changing, so v1 by v2 is equal to under the root of s1 by s2. ग्रेडियंट चेंज होने के बाद ऐसा भी ले लेंगे, v1 by v2 is equal to under the root of s1 by s2. आर चेंज कर रहे, आर चेंज करने के बाद v1 by v2 is equal to r1 by r2 होल पावर 2 by 3. आर कौन रे बाबा? आर कौन रे? आर इज hydraulic mean radius wetted area by wetted perimeter. R is hydraulic mean radius wetted area by wetted perimeter. समझ आ रहा है? Velocity proportional to root s, velocity proportional to r power 2 by 3. Two different types of gradient, two different types of mean radius. ऐसा करेगा. v1 by v2 is equal to r1 by r2 to the power 2 by 3 और s1 by s2 under the root. चलो डन.